A very warm welcome to everybody in today's talk show, episode 2, where we are celebrating the Women's Month, March month, as an empowering month. So, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के दूसरे एपिसोड में मार्च के महीने में, जहां हम महिलाओं का महीना मार्च 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है मिस संजना पाई, जो द पिंक बॉक्स की ओनर है। ये क्या चीज़ है थोड़ी ही देर में पता करेंगे। बट ऋतुजा फाउंडेशन से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि ऋतुजा इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इनका पूरा टारगेट ग्रुप विमेंस वेलफेयर है। आप हमें rutujawomen@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम महिलाओं के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विषयों पर, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके शिक्षण को लेके, उनके एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी सारी चर्चाएं करते हैं, सेशंस करते हैं। और हमारे ऑनगोइंग 3 अलग सेक्शंस हैं। एक है रिसर्च सेक्शन, जिसमें हम महिलाओं के अलग अलग विषय को लेके बहुत ही बेसिक संशोधन करते हैं। इंटर्न्स आते हैं और उनके पब्लिकेशंस भी होते हैं। एक सेक्शन है महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, सो उसको लेके रिलैक्स एट द रेट ऋतुजा का सेक्शन चलाया जाता है, जिसमें गाइडेड रिलैक्सेशन, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और उसके रिलेटेड टेक्निक्स महिलाओं को सिखाई जाती हैं। तीसरा सेक्शन है वो है जनरल हेल्थ एंड अवेयरनेस। सो इसमें मेंस्ट्रुअल, प्री मेंस्ट्रुअल और महिलाओं से जुड़ी हुई शारीरिक और मानसिक बीमारियों के बारे में उन्हें अवगत किया जाता है। और साथ ही साथ हम एक बुक लवर्स क्लब चलाते हैं, पुस्तक मीमांसा क्लब, जिसमें हर महीने किसी ना किसी एक किताब को लेके या किसी विषय को लेके कोई नए उभरते हुए लेखक से मुलाकात की जाती है। तो आप किसी भी इस किस्म के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट से या इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ सकते हैं और इन सब चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। हमारे कार्यक्रम लगभग सभी शुल्क रहित होते हैं। वी डू नॉट चार्ज फॉर आवर प्रोग्राम्स। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। और जो महिलाएं हमारे आज के कार्यक्रम से जुड़ी हैं, वेरी बिलेटेड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। ये एक दिन की बात नहीं है, 365 डेज वुमेन्स डे है, पर एक दिन ज़्यादा याद करते हैं टू एम्फेसाइज कि ये 365 डेज का सिनेरियो होना चाहिए, और होता है। हमारे बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो ये हमें सिर्फ याद कराने के लिए एक दिन का हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट संजना पाई। तो उन्हें इनवाइट करूंगी हमारे शो में। नमस्ते संजना जी, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर ऋतुजाज यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। और श्रोता मित्र जो हमसे जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि संजना पाई का काम, जो क्योंकि सब जगह हमने रखा है पिंक बॉक्स को, काफ़ी लोगों को ये एक क्यूरियोसिटी बन गई होगी कि ये पिंक बॉक्स क्या होता है। तो लेट मी टेल यू लिटिल मोर। संजना पाई जो हैं वो बेसिकली एक एमबीए पास आउट, सिम्बायोसिस से पास आउट नो प्रोफेशनल हैं। इनकी एक कंपनी है क्रिम्सन फुशिया रिटेल, और उसका एक ये पिंक बॉक्स ब्रांड है जो उन्होंने 2018 से शुरू किया है। और ये क्या चीज़ है पिंक बॉक्स, इसके बारे में मैडम हमें डिटेल में बताएंगी। पर जो लोग हमसे जुड़े हैं आज, उनको सिर्फ ये बता दें कि ये एक सब्सक्रिप्शन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। ये एक बॉक्स है जिसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो हर महीने पीरियड्स के लिए महिलाओं के ज़रूरी चीज़ों को उपलब्ध करवाती हैं। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो संजना जी हमें बताएंगी कि कैसे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें क्या-क्या भरपूर चीज़ें आपके लिए उन्होंने कलेक्ट करके एक अलग सा बॉक्स बनाया है। तो यूजुअली हम मिठाई का डब्बा समझते हैं,
We also understand jewelry box, but pink box is something unusual. So, very delighted to have you on our show, Sanjana. And before we start this discussion on what is pink box, आप हमें बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए? जी, जी। फर्स्टली थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए और बिलेटेड इंटरनेशनल हैप्पी वुमेन्स डे हमारी सारी महिला ऑडियंस के लिए। नेहल जी मैं जब मेरा एमबीए कर रही थी पुणे में बैक इन 2018 तभी हमारे कैंपस पे ऑलमोस्ट आई थिंक 100-150 महिलाएं थी। एज गैप जो उनका था 21 ईयर से स्टार्ट होते हुए ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक की महिलाएं थी। और हमारे कैंपस पे सिर्फ एक ही स्टोर था जहाँ पे आपको सैनिटरी पैड्स मिलते थे। तो इनिशियली मुझे यही लगता था कि ओके हम 100-150 लेडीज हैं और अचानक से किसी को पीरियड्स आ जाता है तो वो एक स्टोर है कैंपस पे जो हमारे एकेडमिक ब्लॉक से आधा किलोमीटर दूर है, हमारे हॉस्टल से आधा किलोमीटर दूर है। और ऑफ कोर्स यूजुअली तो गर्ल्स हॉस्टल में सबके पास पैड्स तो होते ही हैं। बट देन जस्ट इन केस आपका ब्रांड आपको ना मिले, शायद आपको रैशेस होते हो बाय यूजिंग सैनिटरी पैड्स, और वो सिचुएशन में या एक या दो ही ब्रांड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो आपके जो वो ब्रांड्स है जो आप सालों से यूज कर रहे हो, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो दिस वाज वन पॉइंट व्हिच केम टू मी व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। और एक बात है कि हमारा मेस का खाना ठीक ही था। आई थिंक एवरीबॉडी हु इज गॉन टू सिम्बायोसिस हु इज वाचिंग दिस माइट बी एबल टू रिलेट विद मी। और स्पेशली पीरियड डेज में मुझे लगते थे कि मुझे चॉकलेट्स खाने हैं, मुझे वेफर्स खाने हैं। और ऑब्वियसली हम हमारा एक शॉप था कैंपस पे वेयर यू वुड गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट अगेन वो भी हॉस्टल से आधा किलोमीटर दूर। और हमारा मेस का खाना थोड़ा ठीक ही था। तो ऑलरेडी जब आप ऐसे मूड में हो जहाँ पे आपको कुछ किसी से बात नहीं करनी, यू जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन इन अ मूड लाइक दैट, यू हैव टू गो एंड ईट। मेस का खाना जो ठीक था उतना ग्रेट नहीं था। कभी-कभी आपको खाना देख के लगता है कि यार मैं तो ये नहीं खाऊँगी। तो दैट गिव मी द आइडिया कि हाँ, पीरियड्स के टाइम आपको जो भी चाहिए अगर आपके पास हो, एक बॉक्स में हो, एक जगह में हो, देन दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया फॉर ऑल वुमेन। एंड ऐसे ही आई स्पोक टू my professors, my batchmates, a lot of other people on campus. And by, that's how I built the pink box. It started with this very basic thing कि हमें जब sanitary pads चाहिए हमारे पास वो नहीं होते। और उसे स्लोली लोगों से आई थिंक बात करते वक्त और जिस वो रिसर्च करते वक्त मुझे पता पड़ा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सैनिटरी पैड्स, बट हमें जो भी चाहिए जिस टाइम पे चाहिए वो सब हमारे पास होना चाहिए। um, so that's how the idea behind the pink box was born. Or subscription, the idea behind doing it as a subscription was कि हम um, महिलाओं को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, चाहे वो करियर हो, घर हो, बच्चे, फैमिली। एंड अमिस्ट ऑल ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे टू डू लिस्ट पे हम थर्ड या फोर्थ या कभी कभी फिफ्थ आते हैं या कभी कभी 10 से भी नीचे आ जाते हैं। अभी तो तो आते ही नहीं है। कभी We आते are ही नहीं never है। on our list. एग्जैक्टली, Yeah. एग्जैक्टली। एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग पीरियड्स रेस्ट करना, करेक्ट खाना खाना, वो तो एक चीज है, बट देन पीरियड्स के टाइम आपको आपके बॉडी को इतना अटेंशन और केयर देना चाहिए जो हम बिल्कुल नहीं देते। एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक अ बॉक्स जो आपके घर तक पहुंचे आपको जब चाहिए। इसमें स्नैक्स हो, आपके सैनिटरी नीड्स हो, पीरियड पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स हो, ताकि वो 5 to 7 डेज में आप खुद को अपने बॉडी को एकदम पैम्पर कर पाओ। So that's the idea behind the pink It's box a and lovely subscription. idea. So I think women needs to learn this कि अपने जी, आप को थोड़ा पैम्परिंग कर सकते हैं. It is permitted. absolutely, पहले तो हम absolutely, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि it is something which is allowed, and then we should do it to ourselves. So exactly, सेल्फ exactly, लव एंड सेल्फ केयर का बहुत बड़ा इश्यू है कि हम इतना सारा दूसरों को देते हैं कि खुद के लिए कुछ बचा नहीं पाते हैं. सो एंड आई एम वेरी वेरी नो दिस थिंग दैट आपको मैंने कॉलेज डे में ही आपको ये क्लिक कर गया कि ऐसा कुछ एक बनाना है. सो आई थिंक that half a kilometer away shop is a blessings in disguise for so जी, many of us that you could develop a product. Otherwise वो कभी बनता ही नहीं. You would never have thought के ऐसा कुछ एक हो. तो it is also like no somewhere symbiosis is responsible.
कि उसने Yes, आपको ये आइडिया दिया कि चलो ऐसा भी कुछ एक प्रोडक्ट हो। सो अ वेरी गुड absolutely. आइडिया, बट देन समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। जी, आइडियाज़ बहुत से लोगों को आते हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि इसको कैसे मटीरियलाइज़ करेंगे, और मेनी अ टाइम्स इट आल्सो हैपेंस दैट यू गेट सो मच ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स के फिर लगता है कि नहीं-नहीं ये तो ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं, पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। सो हाउ यू correct. प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड कि मुझे एक ऐसा बॉक्स एक इंडिया के लेवल पे सबको इंडिया में पहुंचे ऐसा, बिकॉज व्हेन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट यू कांट रिस्ट्रिक्ट कि मैं इतने एरिया में ही दूंगी या इतने एरिया तक ही Hmm, पहुंचेगा। तो इट्स अ बिग correct. थिंग टू एक्चुअली एग्जीक्यूट। तो फिर आपने उसको जी, फर्दर प्लानिंग कैसे किया? जी. I think here as well, Symbiosis has been a big help for me. मेरा MBA specialization जो था, it was innovation and entrepreneurship. So from idea generation to launching it, you know, building up basic strategies, my teachers and mentors at Symbiosis have been a big help to me. हमारे करिकुलम में एक वन पेजर शीट हमें बनाना था जिसका नाम था बिजनेस मॉडल कैनवस। यू कैन गूगल इट, उसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो ये कैनवस पे आपको 9 की पॉइंट्स होते हैं व्हिच एवरी बिजनेस शुड नो। So it includes basic structure, basic things like what is your cost structure, आप इसको distribute कैसे करेंगे, आप who's going to be your audience, right? So this business model canvas is just one thing amongst so many other things which helped me launch. You know, BMC से एक blueprint बन जाता है. You know, you have a small handbook that you're building yourself to launch your business, to take it from an idea to a product or a service to actually putting it out there. So here as well, I think पूरा credit मेरे alma mater को जाता है जो है Symbiosis. And of course, मेरे parents, मेरी family, they supported me a lot, you know, throughout the entire journey. And one thing I want to share is from a very young age, actually, from my teenage years itself, I'd noticed कि, you know, just because we are women, just because, you know, हमें periods होते हैं, there are so many different things in life जहाँ पे we have to face, you know, negative behaviors from other people. And one small, I wouldn't call this a negative behavior, but this is an odd behavior, I think. जब हम ग्रोसरी शॉप्स या केमिस्ट के पास जाते हैं पैड्स देने के लिए, वो लोग एक ब्लैक बैग में रैप ब्लैक करके दे बैग देते में, हैं। या न्यूज़पेपर में कवर करके देते हैं। न्यूज़पेपर, या एग्ज़ैक्टली, एंड आई वुड फील लाइक इसमें कवर करने वाली क्या चीज़ है? यू नो, व्हाई डू यू हैव टू हाइड इट? यू नो, कुछ इट्स नॉट अ कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट, इट्स नॉट लाइक अ बॉम्ब और समथिंग जो हम हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द फैक्ट दैट यू आर गेटिंग योर पीरियड रेगुलरली, दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग व्हिच आई थिंक मोस्ट वुमेन नीड टू नो. So many of us have irregular periods, which is an indication of a lot of underlying health issues, right? So just the fact that you're getting your period, it means that your body is functioning normally. And having periods is very important. And at the end of the day, it's just another biological process. You know, या हम जब बाथरूम जाते हैं किसी से छुपाते नहीं है, तो periods क्यों किसी से छुपाते हैं? You know, it happens to 50% of the population out there. So this is one thing that I would always find funny. And of course मेरे कितनों फ्रेंड्स के साथ ऐसे हुआ है कि पीरियड्स के टाइम आपको बेड पे नहीं सोना, आपको नीचे सोना है, आप किचन में नहीं जा सकते। और इवन वो एज जो 15-16 की एज होती है, एट दैट पॉइंट अ लॉट ऑफ गर्ल्स अराउंड मी वर गोइंग थ्रू दैट। एंड उसका असर उनके एग्जाम्स पे दिख जाता था, उनका जो करिकुलम है। दे अ लॉट ऑफ पीपल वुडंट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, यू नो, बिकॉज ओ अगर मुझे पीरियड है और ये यू नो टूर्नामेंट पे जाना है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, सो दे वुडंट पार्टिसिपेट एट ऑल। और मेरे साथ भी आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट वेरी क्लियरली। आई वाज ऑन माय पीरियड इन आई थिंक 9th standard, and one of our teachers, a female teacher in fact, she was forcing us to take part in a race. She was like jao jao jao, and I was like no, you know, my stomach is hurting a lot. And for some reason she just would not believe me that my stomach was hurting because I was on my period. She thought I was just making an excuse. So I remember very well, she said ki acha tumhe period hai, prove karo. And I was a very rebellious teenager, so I said ठीक है मैम, आप चलो मेरे साथ बाथरूम में, आपको पैड दिखा देती हूँ। So that was one very funny incident that I remember. And when I was building the ping box, all of these things were coming back to me, and I thought, yes, we really need to talk about it. You know, it's a very simple biological process. We need to talk about it. We need to make people aware about it. And you know, at the ping box, our vision is that India should be a period positive society where nobody is held back because of the stigma and taboo around periods. और वही कोशिश जारी है.
या सो यू हैव ऑलवेज बीन सो ब्रेव के आप ये चैलेंज भी उठा ली के टीचर को दिखा देते हैं भाई पीरियड्स है या नहीं. बट दिस इज रियली वेरी कॉमन गेटिंग द नो पैड्स इनटू अ ब्लैक प्लास्टिक बैग एंड ऑल. And there is lot of shame attached to coming into periods. Yes. बहुत सारे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स भी बहुत हैं और एब्सेंटीज भी बहुत पाए गए हैं in research that students don't go to school during the periods and all that. But I think that that stigma should come out somewhere. And Yes. you have really approached so good. Okay, you're providing a box which helps them somewhere in considering their period. So अगर हमारा शो कोई men देख रहे हैं तो it's a humble request, instead of gifting your female partners, friends, sisters, mothers, wives, whomsoever you are linked up, with any of the females, please gift them this kind of a unique pink box, Yes. to help them come out with the stigma, Yes. instead of Definitely. just going through नो कुछ आपने बुके दे दिया या चॉकलेट्स दे दी, उससे बढ़कर रहेगा that you understand their aspect, Absolutely. no, of womanhood. It's a very important part of womanhood to come across periods. तो वो बहुत ही एक यूनिक रहेगा. एंड यू विल ऑल्सो गेन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बैक फ्रॉम द women because they look forward कि कोई उनको समझे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एंड दैट्स हाउ शी इज ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्रेस. सो संजना, बिफोर वी डिस्कस मोर अबाउट द पीरियड बॉक्स, आई एम श्योर द लिसनर्स एंड व्यूअर्स आर हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग के होता क्या है इसके अंदर. तो व्हाई डोंट यू शो अस what all things you pack into this particular box, then maybe we जी, can discuss more about this actual scenario and your journey further. जी. I'll request you to share the slide from your Yeah, end. yeah, yeah, I'll do that for you. So here is again a snapshot of what we do at the Pink Box. It's your one-stop shop for all things menstrual. Any things related to period, चाहे sanitary pads हो, pain relievers हो, menstrual cups हो, biodegradable tampons or pads हो, आपको अगर एक destination चाहिए जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिले, then it's the pinkbox.in. And we make sure that we curate things that are not only good for the earth in terms of biodegradable and compostable products, but they're also good for your body. And we'll get into that later on. So here is our vision behind the pink box, like we discussed, to see India as a period positive society where women are not held back. एंड अब जैसे मेंशन कर रहे थे नेहा जी की अगर मेन है जो ऑडियंस में है आज, I would request you genuinely do look into what we do at the Pink Box. It will definitely help you form a deeper connect with the lovely ladies in your life. लॉकडाउन के टाइम इनफैक्ट कई सारे जेंट्स थे जिन्होंने हमारे पीरियड बॉक्सेस उनकी वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स या सिस्टर्स और इवन मॉम्स को गिफ्ट किए हैं. And the idea behind this is very simple. You want to show your loved ones that you care. And what better than this to say that I understand what you're going through, I accept what you're going through. In Yeah, fact, exactly. one of my closest friends, she has a 10-year-old son, and she's been very open with him from a very small since he was almost, I think, 8 or 9, about what is menstruation, what is the biology. And she had told me once that one time she was on her period and she was not feeling well, and she just told her son ki मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे बस थोड़ा अकेला बैठना है. And her son completely understood what she was going through, that she was on a period, and he said, mama, it's okay, I completely understand. And he just hugged her, and he got her a couple of chocolates and snacks. And that was such a beautiful thing to me. It was something that I had never heard before, that a son is telling his mom ki mama आप chill karo, sab theek hai, मैं handle कर लूंगा जो भी है. And he was only, I think, 10 or 11 when that happened. So I'm trying to work towards a society where there are more young boys, young men, gents who are who look at the women in their lives with that same ideology, and that's what we're actively trying to do with the Yeah. pink box. So And this even is our parents can buy this for their yes, newly coming daughters जिनको first time periods आया है या जी, आने वाला है. I think this would be a good gift to them to take things positively.
कि Yes, अब क्योंकि absolutely. यूजुअली जो लोग फर्स्ट टाइम पीरियड्स में आते हैं दे आर वेरी ट्रॉमेटाइज लुकिंग एट द ब्लड एंड द पेन फैक्टर एंड ऑल, तो शायद ऐसी गिफ्ट्स उनको थोड़ा रिलीफ करेगी मेंटली और ऑल्सो जी, उनको थोड़ा फ्री कर देगी मेंटली कि भाई इट्स नॉर्मल, ऐसा सब होता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आई थिंक वहां से ही टीनेजर्स उसको थोड़ा पॉजिटिवली ले पाएंगे। जी, डेफ़िनेटली। और मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि वेदर इट इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ, आप प्लीज़ आपके बच्चों से बात कीजिए कि अ, हमारा बायोलॉजी क्या है, ये क्यों होता है, और सारे जेंडर्स अलग-अलग हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट। Because what tends to happen is in societies where we don't talk about biology, when we don't talk about puberty, periods, sexual wellness, kids end up learning it from the internet. And a lot of kids, because of connectivity nowadays, a lot of kids end up learning from porn, which is the worst media of educating someone about what is True. sexual health and wellness. So I would really request parents who are watching this, you can definitely reach out to us at the ping box, or you can reach out to Rutuja Foundation as well. We have guides, we have modules that help you have that conversation with your children. So yeah, just a request from my Yeah. end. I'll just move on with my presentation. So this is what our ping box hamper looks like, and this is everything that it contains. So आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्नैक्स हैं, चॉकलेट्स हैं। पीरियड्स के टाइम most of us women feel the need to just eat something sweet, and we get these crazy cravings. And I personally, at one time, I finished half a jar of wafers when I was on my period. I finished entire tubs of ice cream when I was on my period. And while these things give you that feel good factor, it's not always healthy for you, right? During your periods, आप ऑयली स्नैक्स अवॉइड कीजिए, फ्राइड स्नैक्स अवॉइड कीजिए, अवॉइड फूड्स दैट हैव अ लॉट ऑफ मसाला, and taking all of these things into consideration, we build the pink box. So all the snacks and sweets we have, they are completely healthy, they're good for your body. We also make sure कि it's not just sanitary pads and snacks, it's a very holistic care package. आपको जो भी चाहिए periods के time, आपको ये box में मिल जाएगा. So we have pain relievers, we have a couple of teas, we have a couple of stress busters as well, things that will just help you feel good and calm and nice during your period. And as we discussed earlier, the idea is to care for yourself and for you to be pampered during your period. So that's a snapshot of everything that is in the pink box. Okay, that's really good to have. But then, how do you select कि ये चीज़ें मैंने कौन सी चीज़ें पिंक बॉक्स में होगी और whether they are जी, really useful? As you said कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो maybe they are actually junk food or some sort of a spicy material. तो जी, आपने फिर इसको कैसे डिज़ाइन किया कि वो healthy भी रहें और it's also going to fulfill their cravings for eating जी. certain things during the period? जी. We work with a lot of nutritionists and medical practitioners, Neha ji, who have helped us build this box. उनके वो हमें गाइडलाइंस देते हैं, and based on that we look for vendors who have healthy snacks. For example, the picture that you can see these chocolatey bites, but they're not made of maida, they're made of ragi. So it's tasty, but it's still healthy. It'll give you that, it'll satisfy that chocolate craving that you have, but also it'll be in a very healthy way. Ragi is very good for your body, very good for your system during your period days as well as during your regular days. So, to answer your question, we work with nutritionists who helped us curate and build this box. Okay. And how do you select the painkillers and those sanitary napkins? Like, जी, because इतना कुछ market में मिलता है that it's very जी, confusing. That what जी. exactly does this no would be helpful for the health? Ji, correct, correct, correct. Regarding the sanitary napkins, we provide whatever is the consumer's choice, because we've seen a lot of women, हम 16 साल की उम्र से जो brand use कर रहे हैं, चाहे वो Whisper हो या Steffi हो, और आजकल there are couple of new brands also. Once we start using a brand and once we're comfortable with that, हमें वही brand चाहिए, वो shift करना काफी difficult हो जाता है. So the brand of pads that we put in the pink box, it's completely it completely depends on what the consumer wants.
एंड यस, जो पेन किलर्स है वी गो टू इट विद अ वेरी ड्रग फ्री एंड केमिकल फ्री अप्रोच, यू नो. मेडिसिन काफी लोगों को सूट करते हैं, काफी लोगों को सूट नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड टू वी लुक एट आयुर्वेदा बेस्ड ऑप्शंस बिकॉज Yeah. it's completely natural, there are no side effects, most of it's completely vegan as well. So that's how we do the painkillers aspect of it. It's a completely drug-free and chemical-free approach to handling your period pain. And something that we don't give this in the box. We suggest this to people is instead of popping, if your period pains are so bad that you have to take medicines, then definitely you should do whatever your doctor recommends. But some quick fixes are using, heating patches or even ice pack. Hot water bottles तो हम I think सदियों से use कर रहे हैं. Yeah. But a lot of medical practitioners are now suggesting cold packs as well instead of the heating patch. So yeah, that's So something that you I would like. also you have included those heating patch and cold packs also inside your Not not the box. cold pack. No, not the cold packs. We had, so every quarter the contents of the pink box changes. So in Oh, our earlier boxes we've had pain relief patches and pain relief creams. Not in the current one. In the current one we have these menstrual teas that help you kind of give you that relaxing feeling. It's made with chamomile, mint, and they do help control your period cramps also to an extent. ओह दैट्स रियली वंडरफुल सो आई थिंक इसमें काफ़ी सारा रिसर्च जाता है क्योंकि आपको जी. प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है एंड देन यू आल्सो हैव टू सी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगी और Yes. कैसे माने पूरा उसको डिज़ाइन करेंगे एंड देन यू आल्सो हैव टू सी मार्केट वैल्यू because you have to buy it and give it to the no the customer who is asking for the pink box. So how do you manage to do this all of this research before you plan this whole of your pink box? Um, Firstly, we're constantly updated on what's happening in the market, new products that are launched, especially the ones that are based in nature and Ayurveda. And of course, the most important thing is I think talking to your consumers. आपके customers जो हैं, आपके circles में जो ladies हैं who are going through some problems. I think the best way is to just reach out to those people, understand कि at the base, at the root cause, what is the problem. And I think that kind of research tells you everything. Just I think when you sit home and Google, it gives you only a very partial value. But when you speak to people and the more number of your actual target audience that you speak to, I think that really helps you build everything, whether it's your product, whether it's your service, across all industries. I think just speaking to your consumers directly. Wow. So friends, this pink box is not just नो यहाँ से वहाँ से दो चार प्रोडक्ट भी इकट्ठा करके आपको दे दिया ऐसा नहीं है. There is Yes. lot of science, research and lot of work gone in deciding कि कौन से products एक साथ आएंगे into the box and reach your doorstep. So you can blindly order pink box. You don't have to worry कि इसमें मुझे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें कुछ मुझे हार्मफुल मिलेगा या नो समथिंग व्हिच आई हैव टू डिस्कार्ड या मैं नहीं यूज कर सकती. सो यू शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि ये बहुत प्लानिंग से बनाया गया प्रोडक्ट है और आपके लिए हर आपकी रिक्वायरमेंट जो पीरियड के रिलेटेड है उसको ये सफाइस करेगी. इट विल सफिशिएंटली हेल्प यू work out Absolutely. on it. So in that case, Sanjana, how should somebody order this particular box and do you customize it? सपोज किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे ये इससे रैशेस होते हैं आई कैन नॉट यूज दिस काइंड ऑफ a sanitary napkin but I want you to deliver me a particular kind of biodegradable maybe cotton related pad. तो आप कस्टमाइज करते हैं या आपका फिक्स प्लानिंग रहता है कि हम ऐसा ही बॉक्स डिलीवर करेंगे? Ji. No, we customize it to the extent that's possible from our end, and the customization completely depends on what the consumers want. आपने जैसे अभी mention किया था कि काफी लोगों को rashes होते हैं because of the kind of pads they use. और जो market में easily available pads हैं, most of them have a plastic layer जिससे rashes और बढ़ जाते हैं. तो वो जो cottony soft top layer है, वो brand मिलना थोड़ा difficult हो जाता है, but that's one worry of yours that we take care of here at the Pink Box. So you just have to go to our website, thepinkbox.in, or आपको product दिख जाएगा. It's right there on the homepage. I'm gonna try and pull it up. Um,
There it Yeah. is. And after you're done ordering, you can always write to us at connect@thepingbox.in. या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें डीएम कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, किस हद तक कस्टमाइजेबल होगा, डिलीवरी डेट्स भी वी इफ यू जस्ट गिव अस योर पिन कोड वी कैन शेयर दैट एज वेल विद यू कि कितने दिनों में आपके पास आपके घर तक बॉक्स पहुंच जाएगा. So yeah, you can just go to our website or our Instagram and you'll find everything that you need. And just this month, in fact, somebody wrote to us that they require only gluten-free products because of couple of dietary restrictions that they have. So just this month, a few days back, in fact, we've done a box that had only gluten-free sweets and snacks. Oh, So we make sure that finally the idea behind the pink box is you pampering yourself during your period, you giving your body that attention and care that it needs during your period. And we all have our own choices and preferences, चाहे वो dietary हो या फिर आप जिस type के pads use करते हो चाहे उसमें हो. So we customize it to whatever is the best, whatever yeah. works for you. So everybody, she is also providing vegan material जिन लोगों को जो लोग milk dairy products नहीं खा रहे हैं. तो Sanjana also puts in the pink box as per your need vegan products. She also puts products which are gluten free. So आप अपने हिसाब से अगर उन्हें बता देंगे तो वो बॉक्स में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें भेजेंगी. And then you don't have to worry about anything. She does lot of research on your behalf. So आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा, जो आएगा वो बेस्ट ही होगा. And Yes. you are going to utilize it without spoiling your health. So I think it's a wonderful idea. कोई मेरी Thank हेल्थ के बारे में सोच रहा है, वो ही काम कर रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो क्या गलत है? अच्छा ही है, उसको you. यूज कर सकते हैं. So I Absolutely. think it's a very very great idea to get this kind of boxes. And ladies, if you are listening to this, you can gift yourself one such box and have a trial के आपको क्या मजा आ रहा है. एटलीस्ट विमेंस डे के हिसाब से एक बॉक्स तो आप अपने आप को गिफ्ट कर ही सकते हैं. सो प्लीज Absolutely. go ahead for this. We are also requesting you all, viewers, if you have any questions for Sanjana ji, you can please post it into the chat box. You can even write suggestions for the pink box, or maybe comment to encourage us how you're feeling about the show today. So this is how pink box is all about. You can see Sanjana has given you now the complete idea कि ये package क्या होता है. Yes. So Sanjana, my question is that there can be so many names to this particular box, this gift box. Why you have chosen के इसका नाम pink box ही हो? Ji, ji, because pink is that color which is associated with womanhood and femininity. And I actually have a lot to share about this. Usually जब हम सुनते हैं कि आप किसी को पूछते हैं कि आपका favorite color क्या है, mostly women will say pink, and the reaction is pink. Because it's associated कि काफी girly है, इतना bright color है, इतना feminine क्यों है? And whenever people would say that, when I would hear people saying that, I would feel like, so the reason that you guys think pink is bad is because it's too girly. And why is something that is too girly a bad thing? अगर कोई गर्ली है उनको चीजें पसंद है तो that's it, उसमें there's nothing to judge about it, there's nothing for you to be like, oh no, that's girly. It's not a bad thing to be girly, right? And that's why I wanted to make sure कि I want to call this box the pink box itself, because it's not a bad thing to be girly. It's not a bad thing to be feminine. It's one of the most lovely things out there. So that kind of um, again, that judgment that's associated with the word the pink, I wanted to get rid of that as well. Also very interesting. Earlier, for many many years, colors weren't really gendered, in fact, and because pink was a lighter shade of red, it was considered to be a strong and passionate color, because red is the color of blood and a lighter color. Um, and what happened is later on, during the war especially, a lot of women who wanted to show support to, the troops and the military, they would start wearing pink as a sign of solidarity. Because again, pink was a lighter shade of red, which is a color of passion and strength and determination.
And that's when we've seen with a lot of iconic images of Jackie Kennedy, Marilyn Monroe wearing pink, and that's how pink, which was just another color, started to be associated with women. That's how it started, and then slowly more products were targeted for women with the color pink, and that's how pink went from being just another color to a girly color. And just the fact that pink represents strength and determination and passion, and not just a negative judgment of something being too girly. I wanted to reclaim that with the color pink. And that's why when you think of pink, when you think of gulabi, you think of typical girl things, but वो mindset अभी हमें हटाना है. We need to say that Yeah. it's just another color. In Yeah, so we fact, started working I from the name itself. नाम से ही शुरुआत कर दी कि स्टिग्मा exactly. हटाओ. Exactly, absolutely. In fact, I think early days of the Pink Box, I think just about 1 year after I started, मैं एक lady से मिली थी, and she said कि आपने इसको Pink Box नाम रखा है इसलिए मैं buy नहीं करूँगी. आप White Box रखते तो मैं definitely buy करती थी. So that made me think कि that's kind of weird, but ठीक है, it's something that we'll work on. We'll get to that point where people stop associating pink as like as a weird thing, or a thing to be judgmental about. Yeah, so there is this colors linked up with the gender. Blue is always for the boy, and pink Boys, is yes. always for the girl. So ये even छोटे बच्चों के कपड़ों में भी ये differentiation दिखता है. But I think that is what has to be removed, because इस साल का international women's theme भी equality है. Yes. So then we have to go away from gender discrimination anyhow, and by small improvements like this, I think we can reach somewhere in bringing the genders on one platform. But Yes. apart from this, you must, whenever when you started actually the journey, you must have found out some kind of an experience with collecting the products the way you wanted. तो आपने प्रोडक्ट तो आपने रिसर्च से डिसाइड कर दिया कि मैं मेरे बॉक्स में इतनी चीजें डालूंगी. Then how did you manage to find out the manufacturers and retailers who can provide you this, because there are so many people around, और जी. उसमें आपको आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? Did you find something which was like not happening, or something which people took up instantly? Hmm. No, while building the pink box, at Symbiosis we had this subject for lean startup, और lean startup का basic ideology है build, measure, learn, कि आपको perfect product बनाकर launch करने की जरूरत नहीं है. You build your product, you launch it in the market, you understand what is the feedback, and that's how you start building it better and better. And that's what I did. एक prototype version था pink box का, which had all of these different elements that I thought would work for women during their period. And then I actually gave that box to a couple of women around me, and then उनके जो experiences थे, उन्हें क्या अच्छा लगता था, what they did not want, what they wanted to remove. Based on that, I started deleting more things. Went back to our nutritionists who were working with us, and that's how I built it. And again, I've always made it a point to stay connected with the industry. There are so many new brands that are getting launched each day. Yeah. That's how when I look at a product that's got great reviews, I reach out to the manufacturer. Or many times they have come to us and said that we really like what you do, so we would want your subscribers to try out our product. And each and every product that goes into our box is tried and tested by some or the other team member, whether it's a snack or whether it's one of those pain relief roll-ons or patches, everything is tried and tested. That's how we go about the process. And like you mentioned, नेहल जी, कि इतने सारे brands हैं कि आपको कभी कभी पता नहीं पड़ता कि मैं क्या use करूँ और क्या नहीं use करूँ. And for that, we have built our platform, the Pink Box. Apart from the subscription box, our platform also caters to eco-conscious and sustainable period products. Nowadays you hear a lot about menstrual cups, but a lot of people are still yet to move to a product like that. Because Yeah. there's a lot of misconceptions around menstrual cup. There are a lot of concerns that people have around menstrual cups. And what we aim to do is just break through all of that noise, clarify those doubts, confusions, and get a good product to you. Here again, a lot of vendors have reached out to us wanting to put their products on our platform or on our box. And we only work with vendors who have sustainability and eco consciousness as their brand ideologies.
If you go on our platform, you'll find a variety of period products which are all eco-conscious, or they're sustainable, or they're chemical-free and drug-free. So Yeah. we've got menstrual cups, your period panties, we've got tampons, biodegradable pads, compostable pads as well. So that's how we curate it. We basically we work with brands who have a very clear focus of what they want to do. That they don't want to just put another product out there, but a product that makes sense to people, a product that will actually help people. Yeah. And I personally am somebody who believes in a sustainable and an eco-conscious future. And when I discovered that there are so many concerns people have around using menstrual cups, I thought that there's definitely products out there which don't have to be worn inside. They can be worn outside your body as well. Pads, definitely, we've been using pads for so long. And when I was kind of doing my research on what are these alternatives, I came across these really convenient and easy to wear period pants. It's just like wearing another pair of underpants or shorts, and it has that absorbent material inside it. आपको बस पहनना है, यूज करने के बाद उसको धोकर सुखाना है, and then you can use it again. You can use it up to about 5 years to 7 years, depending on your flow and what is your usage. Um, so just keeping all of these ideologies in mind, we've also built our platform, which is the pinkbox.in, where you'll find all these eco-conscious and sustainable products. So the Okay. menstrual cups are there. We've got cloth pads as well. With cloth pads, a lot of people would say कि हमारे दादी नानी के time पे तो ये product use होता था. So aren't we going back in time by using a product like this? And that might be true to some extent, but then again, if you're looking at having an eco-conscious product, if you're looking at having something that's good for your body and the environment as well, then why not? And nowadays Yeah. the cloth pants that we see, they're not the type that our nannies or our daddies would use. They have an absorbent layer. They're with a specific color, ताकि वो stains ज़्यादा ना दिखे. Although blood is a very natural, it's a colorant basically. It's very difficult to get the stain off. So it will end up staining your cloth pads, but again, it's going to be completely hygienic when you wash it, when you dry it out in the sun, and it's a reusable product as well. So that's how we kind of keep to our eco-conscious and sustainable vision as well. Yeah, so that's really wonderful to know. But how has been your experience with the customers? So जब आपने launch किया होगा तब तो शुरू शुरू में तो because ऐसा idea it's not easy to accept और लोगों को जी, कुछ शायद unusual भी लगा होगा तो आपको कैसा experience रहा? It's been around 5-6 years now your product is into the market. तो आपको क्या लगता है are people open enough के pink box जैसा बॉक्स जिसमें मेंस्ट्रुअल रिलेटेड चीज़ें हो और स्नैक्स हो और उनको पीरियड पेन रिलीफ का मटेरियल मिल रहा हो तो वो क्या वो समझ पाते हैं ले पाते हैं क्या परसेप्शन रहता है उनका जी, इनिशियली जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो काफ़ी सारे लोगों को बात ही नहीं करनी थी इस टॉपिक पे बिकॉज़ इट्स अबाउट पीरियड्स एंड आई वुड जस्ट थिंक टू माय सेल्फ कि इफ दीस पीपल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड्स तो प्रोडक्ट तो वो लोग 100% यूज़ नहीं करने वाले. बट देन अगेन आवर मिशन इज़ टू end that stigma behind it. Our mission is to keep at it. So that's what I did. I was like, no, I will talk about it. We started putting a lot of content out there, a lot of information out there about period do's and don'ts, what you should avoid during your period, what you should eat during your period. For example, a lot of us tend, again, we do a lot of snacking, and a lot of these snacks that we have a very high salt content. एंड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑलरेडी थोड़ा ब्लोटिंग तो हो ही जाता है और एक्सेसिवली सॉल्टी फूड्स खाने से वो और बढ़ जाता है. So we started telling people about these little things they can do for their own bodies, something that'll help them take care of their bodies, and that's how we went through that stigma also. So acceptance is definitely something that comes slowly, but it does come for sure. एंड आई थिंक इनिशियली ये परसेप्शन था कि नहीं आपका प्रोडक्ट तो सिर्फ मुंबई दिल्ली बैंगलोर टाइप एरियाज में चलेगा बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. There are so many women, there are so many menstruators all across India. We've delivered our period boxes from a very far away place in Assam that was closer to our neighboring country's border rather than it was close to Guwahati.
And from there, we've delivered boxes to, way south. I remember this one box went to a place that didn't even have proper connectivity. But Oh. thanks to India Post, the good old India Post, we were या actually able to सही, get the box जहाँ there. कुरियर सर्विस नहीं पहुँचती है वहाँ इंडियन पोस्ट पहुँच जाती है. या सो Absolutely, या absolutely. सो और दोज हु वही आर इन टाउन्स दे शुड रिमेन अश्योर्ड. संजना कैन yes, डिलीवर यू इन योर टाउन एनीवेयर. आप फिक्र मत absolutely. कीजिए, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए एंड शी इज गोइंग जी, टू गेट द थिंग्स डन फॉर यू. for या you, absolutely. But या वही दैट्स वो perception initially था कि it's a very tier one city kind of thing. ये सिर्फ metros में चलेगा, but that's not true at all. I think pan India there are so many menstruators out there who want to do better things for their own body, who want to give that self care. So that's again another hurdle that we crossed pretty early on, in fact. that's really wonderful to know that it got accepted, and now you have so many Yes. customers who are really into ordering this particular no material, so that it goes on. So are there any future plans for the period box you're thinking on? Because आप थोड़े थोड़े टाइम में उसको ज्यादा बेहतर बेहतर किए जा रहे हैं, तो आपने कुछ सोचा है कि और इसमें क्या एडिशंस होंगे, या कुछ और आपने इसको डिजाइन करने का सोचा हो? जी, जी। अपार्ट फ्रॉम द पिंक बॉक्स मतलब हमारा बेसिक वर्ज़न जो है, हमारे पास काफ़ी सारे स्पेशलिटी बॉक्सेस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स है व्हिच केटर्स प्राइमरीली टू पीपल हू हैव पीसीओएस. For people who have PCOS, there is a very strict list of dietary restrictions and dietary allowances that you have. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बॉक्स में जो स्नैक्स जाए, जो पीसीओएस बॉक्स में जाने वाले हैं, दैट विल बी कंप्लीटली adhering to that diet. The PCOS box is one thing that we're working on. And yeah, the main thing is just looking at a very sustainable future, a very eco-conscious future with the pink box. I think it is up to each of us. It's all of our responsibility to build that future that we're trying to build. We keep saying कि बहुत waste होता है, बहुत plastics use करते हैं, but only if you start doing something will other people also start doing it, and slowly, slowly that change will come. So future plans is definitely sustainability and eco-consciousness for the big box. या सो दिस इज अ वंडरफुल आइडिया. पीसीओडी और पीसीओएस अब इंडिया में बहुत पाया जाता है, एंड इवन द जी, यंग गर्ल्स, out of 6, almost 2 3 girls, they suffer from this kind of PCOD problem. So I think that would be a great help कि अगर उनको एक पैकेज मिल जाता है मंथली, तो उन्हें कुछ देखना नहीं है. एटलीस्ट दे नो हाउ दे आर सपोज टू हैंडल द पीरियड डेज. 7 days तो उनके आराम से निकल जाएंगे. So I think that's really a wonderful idea, to have a specific PCOD box other than the period related boxes. So yes. संजना, आप इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, तो apart from the customers, has have you got any kind of notification from some other agencies who are working towards no this kind of similar area, menstrual hygiene या sanitation, और आप फंडिंग कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज एक पूरा बॉक्स जनरेट करने के लिए, वेंडर्स से मटेरियल लेने के लिए, यू हैव टू हैव सम फंडिंग. सो हाउ डू यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग? As of now, we're completely bootstrapped. We'll be looking for funding in the future, just not right now. I want to build the platform to a level, to a certain level where sustainability becomes the overarching fundamental behind the pink box, and then maybe we'll look for funding. But that's the funding aspect for you. या And सो पूरे इस जर्नी में ऐसा तो रहा होगा कि कभी ऐसे लग रहा है कि क्या लेके बैठ गए हैं, ये होगा या नहीं होगा? सो देन व्हाट कीप्स यू गोइंग? आई थिंक आवर कस्टमर फीडबैक मोर देन एनीथिंग एल्स. नेहल जी, अगर आप किसी को बॉक्स गिफ्ट कर रहे हो या आपने खुद के लिए बाय किया हो एंड देन यू रीच आउट टू मी एंड से दैट आई रियली लव्ड इट, माय पीरियड डेज वर मच बेटर. So all that feedback really keeps us going. The smallest things. For example, we had somebody who bought a menstrual cup from us, and we even helped her with basic guidelines of how to wear it. It's very important to kind of just stay through relaxed and aram se before you actually try to wear a cup. And once she switched to a menstrual cup, she told us that it was completely life changing. Her periods were so much better. When you're already dealing with pain hota hai or
उसके बीच में आपको ऑफिस जाना है, एग्जाम्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट, अमिडस्ट ऑल ऑफ दैट, वो जो इरिटेटिंग ड्राइनेस, सॉरी, वो रैशेस होते हैं एंड यू फील दैट वेट एंड मॉइस्ट फीलिंग, menstrual cups help this particular lady take all of those problems away. So when we hear all this positive feedback, that's mainly what keeps us going. You know, just the fact that we've helped so many people out there have better periods just because of our box. That keeps us going. Wow, that's so nice to hear that people are taking good advantage of this particular whole of the product. So, if anybody has any comments or any kind of questions, you are please most welcome to ask us from the comment box. And you can see there is a flashing onto your screen about Sanjana's email ID. उनका इंस्टाग्राम का आईडी और उनका ईमेल आईडी दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप उन्हें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या वहाँ से भी आप उनको कांटेक्ट करके प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं या प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। सो यू आर व्यूअर्स नो लिसनिंग टू the journey of a brave girl who has come up with a product which is women giving women. Usually ऐसा बोलते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, पर यहाँ उल्टा है, a lady is helping another lady. So we are changing that stigma also, that ऐसा नहीं है कि women don't help women, women do help women, and that is what Sanjana is trying to do it for all of us. So if there are any comments, I'll wait for 1 or 2 minutes to get the comments. If not, then we can go towards the end of today's program. And we are very happy to have you, Sanjana, that people with this kind of products are presently very minimal in India, और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो पीरियड्स को एक अलग आयाम देते हैं, एक अलग डायमेंशन देते हैं। जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा, वी विल नॉर्मलाइज period as in part of women's health. And Absolutely. then we don't have to go to the shop and get it into black bags, जो हम बात कर रहे थे कि भाई काली थैलियों में बांध के देते हैं, वैसा नहीं होगा। पर ये चीज़ें बहुत कॉमन है इवन फॉर नो लॉट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल, it has become so difficult, people going to Exactly. the shop and getting, there is a kind of taboo, stigma and shame linked up with this. So on a humble request from Sanjana and Rutuja Foundation, we urge you कि आप ये मंथली साइकिल जो लेडीज में है उसको नॉर्मल तरीके से लें, इंक्लूडिंग लेडीज उन्हें नॉर्मल तरीके से ले। ये कोई स्पेशल इवेंट नहीं है, इट्स अ डे टू डे लाइफ part of every woman, and that should be rejoiced and not to be kept as in painful, shameful days away from their work life or their social life. ये नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें उसे कमरे में बंद मत कीजिए, उसे मत रखिए कि ये चीज़ें टच नहीं करनी है, वो चीज़ें टच नहीं करनी है। इट हैज़ नथिंग टू डू, इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलर नो हेल्थ प्रोफाइल जो हमारा होता है वैसे जी, ही है, और उसे वैसे ही बने रहने देना ज़रूरी है। तभी जी, लड़कियाँ उस फ़ियर और शेम से बाहर आएँगी एंड दे वुड बी एबल टू रियली एप्रिशिएट इट, और फिर शायद हमें पिंक बॉक्स की भी ज़रूरत ना पड़े, हम इतने फ्री हो जाएँ। तो हमें कोई किसी को ये गिफ्ट देके उन्हें पैम्पर करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप हो चुका होगा। पर ये अभी नहीं है, तो हम इस किस्म के बॉक्सेस को वेलकम करेंगे और उन्हें हमारी ओर से एक दूसरे को गिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम संजना जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने भी इसको एक अलग आयाम प्लेटफॉर्म दिया है एंड शी हैज कम अप विद सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो संजना, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड thank वी you. लुक फॉरवर्ड फॉर योर पीसीओडी बॉक्स एज वेल, कि आप जी, उसको भी लेके आएँ और फिर इस मंच का इस्तेमाल करें और बॉक्स को लॉन्च करें कि उसमें आप क्या-क्या नई आइटम्स डालने वाली हैं। So that would be also a wonderful thing. And not remaining to that, I would also suggest, why don't you come up with a box for those pregnant women? yes, उनके लिए भी आप कुछ लाइए कि वो अपनी प्रेगनेंसी को भी चेरिश कर पाएँ, एंड जी, शी कैन
also have her own no things during the time of pregnancy. So a lot of, because women Absolutely. go through a lot of different changes in the life, and maybe each of them becomes valuable to be cherished. So Yes. we have one particular comment in the chat box. Yash Purohit, he is saying kudos to you for taking an initiative in the menstrual space. So keep going on, and Thank आपकी you. प्रेजेंस आपके बॉक्स में दिख रही हैं, तो आगे ऐसी ही अलग अलग नई प्रोडक्ट्स लेके आप आते रहें, और हमारे जी, प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करें कि जिससे काफ़ी लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे. And जी, viewers, we humbly request you to at least share the details of the pink box to all the ladies and the men around you, so that they come to know there are certain products which can really be utilized. ये चीज़ें आपके एक फ्लावर या चॉकलेट से कहीं ऊपर हैं, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, किसी को बता तो सकते ही हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, तो दैट कुड रीच टू मैनी एंड समबडी कैन come across period positivity. So on जी, that note, thank you, Sanjana. We'll end up the session today here जी, itself. जी. It Yeah. was lovely being here, Dr. Neha. Thank you so much. या वी एक्सपेक्ट कि आपका प्रोडक्ट और आगे जाए और Thank आपको काफ़ी सारे thank और कस्टमर्स मिले, राइट? हैव thank अ नाइस you. टाइम. गुड नाइट. Good गुड day. Bye-bye.